मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री राम नाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस NB रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की
आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करते हैं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की
करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत और हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है।
हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया बल्कि दुनिया के सामने नई मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और स्वजनों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ
तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नर्क के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable President, Srimati Droupadi Murmu ji, respected Sri Ram Nath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years.
I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I'm happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jivana bacche, narke paditav, jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। All right, so those of course were the proceedings that took place in the Central Hall of Parliament. Madam President Droupadi Murmu has been administered the oath of office by the Chief Justice of India, NV Ramana. As you can see there, members of Parliament and senior dignitaries in fact meeting with the outgoing President Ram Nath Kovind and the newly elected President of India, the 15th President of India, Droupadi Murmu, only the second woman to occupy the highest constitutional post, the first tribal president of the country, and as she said, the first president of India who was born in independent India. So President Droupadi Murmu meeting with members of Parliament, greeting Prime Minister Narendra Modi there on your screens. This, of course, after all the ceremonial proceedings in the Central Hall of Parliament have just been concluded. President Droupadi Murmu and the outgoing President Ram Nath Kovind will now make their way back to the Rashtrapati Bhavan, where there will be a ceremonial event which will take place where, of course, they will exchange chairs. And as you can see there, the newly elected President of India, Droupadi Murmu, there on your screens, meeting and greeting with members of Parliament before, of course, they leave for the Rashtrapati Bhavan. All right, joining us on NDTV, we have Aarti Jairat, senior journalist. We also have Professor Deepa Sinha of the Ambedkar University in Delhi, and Srijan Pal Singh, the former advisor to Dr. Kalam, who's been with us through the course of the morning. Very quickly to you, Mr. Srijan Pal Singh, first, you know, we've seen all of the formalities in the Central Hall of Parliament. They've just concluded. We can see there, you know, the outgoing president, the newly elected president, Vice President of India,
Chief Justice of India, and the Speaker now exiting the Central Hall of Parliament. What will we see happen next? Well, now what has happened is that the President of India has changed. We have now the 15th President. Droupadi Murmu is now the President, and the 14th President, Ram Nath Kovind, is now the former President. So they will go back now, back to the Rashtrapati Bhavan. The President's bodyguard, which you saw at the beginning when they had just exited the Rashtrapati Bhavan, they'll be there waiting for them. The President's bodyguard will now give salute to their new President, which is Droupadi Murmu. Of course, the former President, the 14th President, will be accompanying her. They will once again go in the Rashtrapati Bhavan. They will go to the committee room. There'll be a small ceremony kind of a thing where, official handover, some introduction to the officers which were there, and some of them which will be now going out. They will be there. And after that, following that, the 15th President will assume her office in the Rashtrapati Bhavan. That will be her residence for the next 5 years. And the 14th President, the outgoing President, will then be departed from the Rashtrapati Bhavan. There will be a small ceremony to see him off, where he'll greet all his officials, his bodyguards, and so on. And he'll head to his new residence, which has been given to him as per the constitutional provisions. And this will formally conclude the switchover from the 14th President to the 15th President, a historic moment. And of course, these sites which we see it once only in 5 years. I may also point out that this may be the last time in this Parliament that such a ceremony will be held. After this, of course, we know the new Parliament building is coming up. So in a way, while the first Adivasi President of India takes office, it's also a time when the building which you see right on your screen behind the dignitaries, that building will probably see it for the last time. The next time it happens, it will probably be a new building. All right. So the last time that we're seeing a president take oath in this Central Hall of Parliament, that's an interesting observation as well. Aarti Jairath is also with us. Aarti Jairath, a historic day for the country indeed, as India today welcomes its 15th President in the form of Madam President Droupadi Murmu, the first tribal president. And very interesting that she said in her address she's also the first president to be born in independent India. Yes, in fact, her speech was quite interesting, Rishika. A few things I noted in her speech. One was, of course, the aspirational, part where she talked about her background and, getting a primary education was a dream for her, and how, she is a symbol of how, you can dream big and achieve big in today's, modern democratic India. So I think, that way the, symbolism, the aspirational symbolism is very strong, and she really played that up. The second, of course, was the fact that she committed herself to being a constitutional president who will uphold the constitution, which is, I think, very important at a time when, there have been so many questions being raised about, the way constitutional provisions are being assaulted or bypassed or whatever. So, I think that's a very reassuring, kind of comment from her. And the third, which I think is very significant, is when she talks about, her links to nature, as a tribal, because she said that, we in tribal society, we take from nature and we give back. I'm just going to interrupt you for just one moment to listen into what's happening outside of Parliament.
All right, so the newly elected President of India, Droupadi Murmu, leaving Parliament. She was given the customary salute as she exited Parliament there, and she's of course now going to make her way back to the Rashtrapati Bhavan, accompanied by the outgoing President Ram Nath Kovind. And to see her off, Speaker Om Birla, the Vice President of India Venkaiah Naidu, and the Chief Justice of India Justice Ramana there standing at the steps of Parliament to see her off. They will of course be making their way back to the Rashtrapati Bhavan, the President's Guard of Honour accompanying them, and they will follow the same route back from Parliament to Rashtrapati Bhavan through Rajpath and Vijay Chowk. Similar scenes that we saw about an hour ago when the cavalcade moved from the President's house to Parliament House. So we are of course going to continue to get you all those live pictures. Short break here, but our coverage of this historic day continues on the other side. Welcome back. You're watching NDTV 24/7, and we're of course bringing you all the latest live pictures of this historic day as India's 15th President has just taken oath. Madam President Droupadi Murmu, accompanied by the former President of India Ram Nath Kovind, making their way back from Parliament to Rashtrapati Bhavan. Droupadi Murmu has scripted history by becoming India's first tribal president, only the second woman president to occupy the highest constitutional post, and also the youngest president in the Rashtrapati Bhavan. Live pictures there of the President's Guard of Honour accompanying the newly elected President, Droupadi Murmu, back to the Rashtrapati Bhavan. We have Aarti Jarat, senior journalist, with us, Professor Deepa Sinha of the Ambedkar University, and Srijan Pal Singh, former advisor to President Abdul Kalam. Aarti Jarat, we had to interrupt you earlier, but you were talking about the interesting observations from Madam President Droupadi Murmu's Parliament speech, and how very interestingly she's talked about sustainable living and how tribals essentially have always lived in harmony with nature. Absolutely. And, today when issues like climate change, kind of the rapacious, sort of mining that is going on in tribal areas, are such big issues. The fact that she flagged this is very, very significant. And I hope that in the next 5 years, because she is so empathetic to the need to preserve nature and live in harmony with, our environment, I hope that she will, gradually increase some sensitivity to these issues over the next 5 years as president. Because, the president can, of course, president does not frame policy, but the president can provide, can be a guiding light to governments, to policymakers, to state governments. And, I think this is a very interesting input that she brings into the office, and let's hope, she actually is able to, sort of influence, the sort of decisions and policies. It's very interesting, Aarti Jarat, that you point that out, and that you specifically picked that point from her speech as well. And let's get in Professor Deepa Sinha to respond to that, because we were also earlier discussing, the fact that she has in the past rejected bills which she felt were anti-Adivasi. They were sent back even though they were passed by her own party. And one in a certain sense hopes from that as an example that she won't be a rubber stamp president. Professor Sinha. Absolutely. I think the three issues that she raised and which come from her own personal identity and position are all very important and respond to the challenges that the country is facing today. One is related to how we have a more sustainable form of development where you see growth and progress as we understand it along with protecting the environment. And I think Adivasis, we know in our country, have been at the forefront of this in
in the struggles to protect their forests, to their lands, which is not something which is only for their benefit, but for actually protecting nature. And it is encouraging that she's included that in her speech. And like you said, that in her tenure as governor in Jharkhand, she showed us that she would not just go by whatever the government in power decides on these issues, but actually applied her mind and her experience to look at those bills and say that this is not done and I will not put my stamp to this. And it's reported that she influenced it to be amended. So I think so there is a hope that she could provide a vision for in fact a different model of development as we go ahead. And the other two issues that she mentioned also, again, something that I think all political parties and generally the polity in India needs to think about how we will achieve, which is to do with inclusion of Adivasis, into as well as inclusion of women at a time when we recently had the gender gap index once again showing that India is doing very poorly in this. We have very little low levels of women's employment. So not just symbolically as being an inspiration to women, particularly Adivasi women, but also hopefully that she would take interest in these issues within the limitations of what the President's office can do in giving the right sort of messages. Well, absolutely. You know, a very strong message has been sent out by the NDA government on the selection of Droupadi Murmu as the NDA's presidential candidate. She's, of course, got votes cutting across party lines. She was a popular choice. And it's been really interesting to see some of the things that she's highlighted in her very first address in Parliament. Srijan Pal Singh, final comments from you, as, of course, we see that presidential cavalcade roll back into Rashtrapati Bhavan. Madam President is back to the Rashtrapati Bhavan. This is where she will be living for the next 5 years. And, like I said, her journey has been very inspirational. Some of the things that she's talked about in her first address have been very inspirational. So one sincerely hopes that, she does great things in the next 5 years. Yes, absolutely. These next 5 years will be extremely important for India, and it will test her. It will give her an opportunity to showcase her to not just Indians, but also the rest of the world. India is a country now which has seen two female presidents. Compared with the United States, they have seen none. India is now seeing a tribal president. Most countries do not have a president from the native population, if I could compare them on the same pedestal. The next, as the president herself highlighted, 75 years of independence India would be celebrating. And it's a kind of an independence of its own kind when a tribal person, a tribal woman is strong enough, is assessed, and she went through the rigorous test of being a president. So let's not downplay her role as a social worker as well. And all those things, India sees another form of an independence, which is a social equalization, which is very, very important. I'm very happy she talked about sustainability, because India is on a trajectory of growth, but are we making it a sustainable growth path? That's going to be very important. I think that will be her hallmark for the next 5 years. And that is not just an Indian leadership issue, it's a global leadership issue. As she has said, it's Vaishvik, which is a world issue. So those things are important. And the next 5 years, we'll all have our eyes set on her. I'm very confident and I'm very hopeful that she'll bring great glory to India, not just in our own country, but also outside. And here she is getting off the motorcade with the now former president, and her president bodyguards are waiting for the Madam President. And it's a historic moment in India's, the new India, as we talk about. Yes. I'm sure any youth who's watching, any young girl especially who's watching, does not matter where you start. If you wish upon the start, you can get it. So that's the message which Madam President brings in with great responsibility. She talked about kartavya, and I think her own sense of responsibility and kartavya is something which we all are very optimistic about. And very interesting what she also said, Aarti Jairat, which is working for the welfare of the world above self-interest. That was one of the lines that she quoted, from a poem. I think this is in the context of the fact that India is now, the chairman of G20, and therefore, in a leadership position.
TVG Commandant Colonel Anup Tawari giving the command. The President of India, Srimati Droupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ram Nath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The President moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building